Hi guys, welcome back. Daily dose of motivation and important comment coming from. Of course, I like listen. I like reading all the negative comments also that come on the channel. So there's a good comment. Maybe makes me want to pull up my socks. At somebody found my motivation to be cliched and getting cliche by the day. Yeah, so I have an answer for that. Basically, first let me do that, then we'll come to what I want to talk today. So basically, if you look at self help and motivation, if you read 100 books or so, which I've done, and also practiced it on so many thousands of, not thousands, no, millions of students who I've trained. What I realized is that it's basically 40-50 points that everybody talks about the same thing. And if you order it in the correct order, it's maybe a set of 10-15 points that you need to organize in the correct order in which you organize it. So I'll make sure that my late night heart to hearts on motivation from today onwards keep moving from one point to the other. And of course, I would think that if you broadly follow this, I should be able to cover most of the points, and then after that you'll again start seeing repetitions of what I talk about, or maybe I look at an example someday, and us example ke basis मैं motivated to reiterate one of these points, etc. So it'll tend to get cliched and this thing. So ultimately, if you read 100 books, as I said, you realize that everything is ultimately cliched in what Anthony Robbins is saying versus what Stephen Covey has said. They basically talk about the same things in different formats. So, but having that experience, and having, as I said, applied it to lakhs of my students, millions of my students whom I've trained, I'll be able to give you. I mean, the one thing I pride upon on my motivation is कि मैं तुम लोग को एक बहुत structured approach दे सकता हूँ कि जो tools मिलेंगे तुमको, ठीक है? और जो पहला tool मैं last कुछ podcast कुछ broadcast में बोल रहा था, वो ये था basically कि खुद को उठाओ. मतलब you have to pick yourself up. और that was my message yesterday. कि you have to मतलब अपने around देखोगे तो you'll start seeing so many people who are picking themselves up from where they are, and they're transforming themselves. And this message cannot be said enough number of times, because every day around us we have people who are not doing it, and for every day that you don't do it for yourself, you are basically wasting a resource. And somebody once told me that the only thing in life that you cannot create is time. पैसा क्रिएट कर सकते हो, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हो. टाइम, आज तक कोई भी टाइम क्रिएट नहीं कर पाया है, और ना तुम कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ इज टाइम, विच इज समथिंग वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड. सो टाइम मैनेजमेंट पे इश्यूज एक्सेट्रा मैं लाऊंगा आगे एज ए मूव दिस इनटू अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. But today I wanted to talk about when you start trying to do something. When you start trying to do something, तो तुम्हारा हजारों लोग तुम्हारे आसपास आ जाएंगे. Hundreds and thousands of people will mock you about you, and they'll keep telling you that you can't do it, etc. And you need to understand that is the story of anybody who picks himself up. और जब तुम अपने आप को उठाते हो to do something, when you start picking yourself up to do something, to take yourself to the next level, to achieve something, कुछ भी, you might be physically unfit and you decide कि you want to run the marathon, तो you say कि अब मैं start कर रहा हूँ इसको, आज से start कर रहा हूँ और मैं इसको continue करूँगा. तो पहले दिन लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, but if you keep doing it, वो खत्म हो जाता है. और उस point पे जब when people are mocking you, etc., you are also facing an internal battle कि मेरे से होने वाला है कि नहीं. Because if you have picked up something transformative, if you have picked up something जो तुमको transform करेगा, तो तुम्हारे अंदर में खुद doubts भी रहेंगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं इसको. And those doubts are accentuated or they increased because other people are also telling you तुम नहीं कर सकते हो. So this battle, this internal battle and this external battle is very important in your journey when you're trying to transform yourself. And ये पूरा message मेरा transformation के बारे में है. Because that's what is the basic premise of life. Because I always think this way, maybe where I am now in my life is because of 3-4 transformations I did to myself over the last
15-20 ईयर्स, और मेरे को हमेशा ये नहीं दिखता है कि मैं क्या कर लिया हूँ, मुझे दिखता है हमेशा कि मैं क्या करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बिकॉज एक बार तुम सीख जाते हो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, इट काइंड ऑफ बिकम्स एक नशा टाइप हो जाता है कि ये तो करना ही है मेरे को, क्यों नहीं करूँगा मैं, और जब ये प्रोसेस आ गया तो वाई विल आई नॉट डू इट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, as I told you, I call this the battle of the beliefs. जब तुम कुछ कोशिश करते हो करने की, when you start picking yourself up from the ground or below the ground or from mediocrity, when you start picking yourself up, तो तुम्हारा इंटरनल बिलीफ तुमको क्वेश्चन कर रहा है और बाहर वाले लोग तुमको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो तुमको पुट डाउन कर रहे हैं। और ये बैटल ऑफ द बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू विन दिस बैटल ऑफ द बिलीफ। तो बिलीफ इज क्रिटिकल, सो वो बिलीफ बैटल तुमको जीतना पड़ेगा। उसको जीतने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा, एंड दिस इज अगेन टूल्स। आई टोल्ड यू, I always believe in the power of giving you tools rather than just motivating you. Hundreds and thousands of people can motivate you, but I personally believe that it's a much more valuable advice if I can actually hand you the tools कि इससे करना है, ये काम करना है तुमको। तो दो चीज़ मैं बताऊंगा इसमें बैटल ऑफ द बिलीफ जीतने के लिए। पहला है कि अपने आप को तुमको बहरा में लाना पड़ेगा। You have to make yourself completely deaf. तुमको बाहर का सब सुनना बंद करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डेफनेस अगेंस्ट पीपल हु आर टेलिंग यू दीज थिंग्स। उनके खिलाफ तुमको पूरा डेफ होना पड़ेगा, उनका बात सुनना बंद करना पड़ेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो है, तुमको फिर अपने बैटल्स में, जब तुम अपने चैलेंज से बैटल कर रहे हो, कुछ भी हो, इट माइट बी सेइंग रनिंग अ मैराथन, जब तुम 100-200 मीटर दौड़ के थक जाते हो, और इट माइट बी सेइंग प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे तुमको टॉप 500 में आना है, तो 2-5 लाख लोग के बीच में कोई भी बैटल जब उठाते हो, तो तुमको अपने आप को छोटे छोटे एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो तुमको दिखाएंगे कि मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर तुम मैथ्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, तुमको अपने आप को एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि मैं एक क्वेश्चन जो मैं कल नहीं कर पा रहा था वो आज कर पा रहा हूँ। तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पा रहे हो अभी, तो कल जब तुम जाओगे दौड़ने तो 250-300 तक करने की कोशिश करना। खुद को एविडेंस दिखाओ कि जब मैं कोशिश करता हूँ तो 200 से 250 कर पाता हूँ, और एक दिन आएगा जब तुम वो 42 किलोमीटर भी कर लोगे। दैट्स द स्टोरी ऑफ एवरी मैराथन रनर ऑल्सो। सो जस्ट रिमेंबर दिस एंड मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस।